कल हमने सीखा था कि जब इंसान स्वयं के योगदान के बिना किसी एक्शन को दूसरे से करवाता हो तो इंग्लिश में कैसे बात करनी है। आज हम सीखेंगे कि जब इंसान स्वयं के योगदान से किसी काम को दूसरे से करवाता है या दूसरे की डायरेक्ट हेल्प से खुद करता है तो हाउ टू स्पीक दैट इन इंग्लिश। इन दिस सिचुएशन we will use make. Welcome to RPN, and it's time to learn with RPN. Let's think and speak English. Yes, make. Let's learn some related actions. Hasana, make laugh. Rulana, make cry. खुश करना, make feel happy. दुखी करना, make feel sad. गुस्सा दिलाना, make angry. समझाना, make understand. For example, here class is going on. Students are understanding something here. So they can say, we are understanding. And teacher can say here, I'm making understand. किसी दूसरे को action करवाने के लिए we can also use action in a structure. Make somebody action. For example, let's take some more examples for better understanding. तुम क्यों रुला रहे हो? Why are you making cry? तुम्हें उसको हंसाना चाहिए. You should make him laugh. मैं तुम्हें खुश कर दूंगा. I'll make you feel happy. तुम उसे दुखी कैसे कर सकते हो? How can you make him feel sad? उसे बाहर खड़ा करो. Make him stand outside. मुझे उसको ऑफिस में बैठाना पड़ा. I had to make him sit in the office. It's time to learn daily use sentences with RPN. Here is first. मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया. I made him understand properly. Here is next. तुमने मुझे खुश कर दिया है. You have made me feel happy. अक्सर जब हमें कोई तंग करता है तो हम कहते हैं मुझे गुस्सा मत दिलाओ. Don't make me angry. Let's go to the next section for word for a person. Here are two types of person. One is बहिर्मुखी. ये वो इंसान है जो अपनी बात दूसरों के साथ शेयर करता रहता है और ज्यादा मेलजोल में विश्वास रखता है. Such type of a person is extrovert. Extrovert is someone who is not shy and prefers to spend time with others. Second person is अंतर्मुखी. ये वो इंसान है जो शर्मीला होता है तथा अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर नहीं करता और ज्यादा मेल झोल में भी विश्वास नहीं रखता. Such type of a person is introvert. Now, introvert is someone who is shy and prefers to spend time alone. Let's go to the next section for idioms and proverbs. कई बार जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम भी उसके साथ गलत करने की सोचते हैं. लेकिन मैं यहाँ ये समझाना चाहती हूँ कि किसी गलत काम के जवाब में किया गया गलत काम सही नहीं होता. Proverb for the day is two wrongs don't make a right. It means trying to get revenge on someone who has hurt you will only make things worse. I don't want to take revenge as I know two wrongs don't make a right. It's time to practice now. Please pause the video. Thank you guys and have a nice time.